Voice in association with IIYC and HIS Bus Engineering College. So we have been doing this motivational workshops and different seminars, webinars in your college as well as in many other colleges like Jadavpur University, Heritage, and Sripur Engineering College, IIT Kharagpur, like that, empowering the youth especially. So in Netaji, in our college, I am alumni from your college, passed out from CS department. Now I'm working in Cognizant from past 5 to 6 years. So yeah, so last session was Power of Habits. Most of we have attended it. Some of you are new today. So what I request is that you all can write your name, your department name, your section name. And if you are not from Netaji Subhash Engineering College also, you can also mention your college name in the chat. All these 4 details. So this will be counted as an attendance. Okay, this is a certified course, so that's why it is necessary that you have full attendance in the course. Okay, so you have to give attendance for 2 times. Now you have to give your first attendance, those who have come recently now, and second attendance you have to give at 7:15 p.m. Okay, it's not like that abhi attendance diya, fir bhag gaye, fir uske baad fir se aaya, college se sessions kiye the. It's not like that, guys. Okay, so yeah, so we had a very wonderful session last time. And our speaker was Professor Shubhak Sen, last session speaker. He's also there with us today. So Professor Shubhak Sen is from Techno India University. He's a professor over there. So he gave a very wonderful session on mind, on power of habits, how we can control our mind, intelligence, and what are the different levels in our mind, subconscious mind and conscious mind, and very beautifully has explained that session. So I hope your seniors have given you the recording of last session as well as the link of the quiz. So I'll just tell you the format of this course. So the name of this course is Mantra of Life. So it consists of 4 sessions. Okay, the first session hum log ka ho gaya tha Power of Habits last Sunday. So today we'll have the session on tapping the power of divinity. And then tomorrow at 12 o'clock, we'll have another session, Infallible Vedic Wisdom. And your last session will be on next Saturday, Discover Yourself. Okay, it will be a very special session. So this course is in 2 parts, part 1 and part 2. So currently we are in part 1, as the part 1 will get over next Saturday. And then from next Sunday, it will start part 2, a Mantra of Life part 2 with the first session, Searching for Happiness. Okay, it also has 4 sessions. So total, there is 8 sessions in this course. Okay, the format is that after every session, you will be given a quiz. Okay, so based on your quiz scores, and all the quiz questions will come from the session only. So based on the quiz scores and your attendance, you will be given the marking, as well as based on that, you will be qualified for the certificate. Okay, so today the power is tapping the power of divinity. Sorry, the topic is tapping the power of divinity for today's session. And we have a very special speaker with us. He is there present with us, Harmendra Mishra sir. So Harmendra Mishra sir will be giving us today's session. So we welcome you sir here. And let me give a small introduction about him. So he's from Madhya Pradesh, Indore, Harmendra Mishra sir, and he was very intelligent in his childhood, and then he got into EC department in IIT Kharagpur. Okay, and he's from 2018 IIT Kharagpur batch, and currently he's working in Qualcomm, one of the core companies for EC department, and continuously he was a topper of his one of the toppers of his department in IIT Kharagpur, and now he's working as a design engineer in Qualcomm. So he has given test of many companies in the placement, and in the first day itself he got into Qualcomm, and he has maintained a CGPA of 8.5 in IIT Kharagpur continuously throughout his all the semesters. So he does. He's also a member of Voice, and also he's associated with founding Susamskar Foundation, wherein he does many motivational workshops and webinars in many different colleges like IIT Kharagpur, NIT Rourkela, NIT Warangal, NIT Jamshedpur, BITS Pilani, Jadavpur University,
and like that many colleges empowering the youth, motivating the youth in the right way, in the right direction. So main focus is that how can we take this knowledge of Bhagavad Gita in a practical way to the current youth so that their life can be enlivened, okay? They can come out of their bad, dirty habits, and how can they focus their life? How can they build their career? Okay, along with great character. Okay, so a very special course he seminars he does in all the colleges and universities. So he also when he was in his first year, like how you all are there, so there also was a session in his college, similar kind of, and after that with introduction, he's coming to the session, he got introduced to voice. So voice is just near your college only. So in IIT Kharagpur also there is a voice near the campus. So he saw that how the life of voice is very nice, and he stayed in voice for 4 years throughout his engineering. He got training from the voice, and now he's very successful in his career and also inspiring many youths. Okay, so let us welcome Harmendra Mishra sir to start the today's session on tapping the power of divinity. Welcome, sir. Thank you very much, Akshay. It's very kind gesture of you that you spoke some good words about me for motivating me. I request you for one thing, can you share the screen, or I am supposed to share the slides? Actually, these people have created such good slides with a... Yes. Everything you will share, right? Yeah, that will be good. Yes. And am I audible? Is my video clear? Yes, video is clear, sir. Okay. Yeah, just my internet is a little bit unstable. Okay, SMS. Yes. So good evening all of you, and I'm very happy that today I'm getting an opportunity to speak to the students of Netaji College. Initially I had a conception that Netaji College is a medical school, is a medical college, but today when people were posting their departments and all, that misconception was cleared. You people are from engineering college, so actually this will make my presentation much more relevant, and I will be comfortable to speak out because generally what we have seen and experienced in my life of recent 5 years in IIT was electronics, all throughout the engineering, the maths and other spectrums, right? Similarly, right now in my job field also, fortunately, I'm in a core job in Qualcomm Private Limited, very famous for their Snapdragon designs, and there also I'm dealing with engineering. And actually, anyone who is serious in his studies, though biology or engineering, will understand how there is someone who is controlling. There's a small electron. All of us know that basic 11th and 12th stuff. There's a small electron, chota sa electron. The mass of that electron is 9.3 into 10 to the power minus 31 kg. Like it's so actually why this mass comes out, because we can't measure lower than that. So this is 9.3 into 10 to the power minus 31 kg. The mass of the electron, the minimum possible weight in whatever a human being can measure through various instruments and all. And we see that this small electron, how this electron is running, or to put a speed breaker for this electron in a small device, is creating a revolution. We are having 4G, 5G. We are having this fast laptops, mobiles, MacBooks, so many things coming up just by this small electron. One is small electron which is present in every particle. Every compound, if you divide, it will come to an undivisible part. That undivisible part has this one electron which is just running through some wires or something, and we are seeing the beautiful screen, and you have your smart screens and you are just touching it and everything is happening. Who made this electron? This was the simple question which used to bother me in my first year and second year. Electron, so much I am hearing about electron. Big scientists are behind this small electron. अगर हमारे घर में चूहा हो और वो बहुत कुतर रहा है सामान को, उसके पीछे भागने में थोड़ा सेंसिबल बनता है. चूहे को पीछे भागकर उसको पकड़ना है और फिर उसको बाहर कहीं छोड़ के आना है, राइट? पूरा घर तहस नहस.
Chuha, the mouse, becomes the center point of all the discussion. Mother is talking about him, father is talking about him. We are angry from the mouse. We are behind that mouse, a small creature. Here, much more smaller than a mouse is an electron, and to whom we call the most intelligent people in the universe, the people with highest of their IQs, great mathematicians, everyone, even biomedicists and the engineers are behind this one small electron. What this electron is doing? Actually, this electron is sustaining the entire civilization of 21st century. Anyone here can imagine his life without electron. Electron is basis of your internet, basis of your all the gadgets, laptop, mobile, is the basis of the electricity by which we use cooler, AC, television sets, microwave ovens, gas stoves, induction, pani ki motor, all these things, electron. And what scientists are doing, they have not produced even a single electron till today. They are just behind putting all the resources and intelligence to pick out some formulas by following which this electron works. ये इलेक्ट्रॉन काम करता है जिन नियमों के अनुसार, बस उन फॉर्मूलास को पता लगाने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट अपने सारे के सारे संसाधनों को, बुद्धिमत्ता को, किताबों का उपयोग लेके पीछे पड़े हुए हैं। एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बनाया है आज तक किसी ने, नहीं बनाया है। पर पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है वो इलेक्ट्रॉन पे टिकी हुई है। यू एग्री और नॉट? इवन योर कोविड, इमेजिन करिए कोविड पैंडेमिक होता और ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्या होता? वर्क फ्रॉम होम, इलेक्ट्रॉन। इवन जो सैलरी आता है आजकल, इट्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ई पेमेंट यू गेट, राइट? आपने जो आपका कॉलेज भी फीस भरा, इलेक्ट्रॉन से भरा। आपने क्लिक किया इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन तार में भागा, वो जाके दूसरे कंप्यूटर पे क्लिक हुआ और वो आपका जो रुपया था, जितना भी फीस होगा कॉलेज का, वो शिफ्ट हो गया। और फिर इलेक्ट्रॉन से ही क्लिक किया कॉलेज में बैठे बैठे किसी ने, वो इलेक्ट्रॉन तार में भागा, वो इलेक्ट्रॉन आपके कंप्यूटर में आया और आपको मिल गया आपका एडमिशन लेटर। Can you imagine 21st century without electron? Any one of you? Any doubt about this greatness of electron? The smallest of all the particles found in the creation yet. Chat box आप लोग लिख सकते हैं, तो मुझे पता लगेगा कि आप सुन रहे हो, कि आप सो रहे हो, कि आप समझ पा रहे हो। लोग छोड़ने लगे मीटिंग जैसे मैंने चैट बॉक्स में। This tactics my sister uses sometimes. जैसे मैडम क्वेश्चन पूछती है, वो तुरंत मीटिंग ही छोड़ के भाग। No offense please, just joking. Nishant has no doubt. So whomsoever will type in the chat box, please pick up their names and make a table. My request is Akshay, so that we can try to give them some extra marks or goodies if it was personal. But yes, some of the acknowledge their participation. Yes, sure. Nishant is very enthusiastic. उन्हें अपना डिपार्टमेंट भी लिख दिया. That's very good. Okay, so I hope you have understood. अब ये इलेक्ट्रॉन जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है और पागल हो रही है, उस इलेक्ट्रॉन को हमारे सामने तो किसी साइंटिस्ट ने आज तक नहीं बना पाया, पर यह इलेक्ट्रॉन पूरी दुनिया को सस्टेन कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया? Let us try to understand the creator. Isn't this very important? हमको खाना अच्छा लगता है, right? हम किसी we go to house of some relative, हम किसी रिश्तेदार के घर पे जाते हैं, बहुत टेस्टी वो हमको डिनर सर्व करता है, दोस्त के बहुत टेस्टी खाना। हम जैसे ही वो खाना खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, आप बंगाल में हैं तो बंगाली रसगुल्ला खाते हैं, आप क्या पूछते हैं? रसगुल्ला का स्वाद तो एक सेकंड में चला जाता है, आप पूछते हैं किसने बनाया? Isn't it? और जो लड़कियां रहती हैं, लड़के रहते हैं जिन्हें कुकिंग का शौक रहता है, वो ये भी पूछते हैं कि कैसे बनाया, who cooked, how he cooked it, right? And when you meet the person, either the mother of your friend or sister of your friend or father of your friend or your friend himself, you
feel a kind of satisfaction. We strike our relationship right there, and that relationship is very real, isn't it? Similarly, we see that someone has created so many things for our pleasure, for our sustenance. We never think that I have to breathe now. Now I should exist. We think about it. No, if you do pranayam, you may do it consciously, but unconsciously, we are inhaling and we are exhaling. Whatever we can desire and wish is present in the world around us. जैसे कपड़े पहनना है, उस टाइप का थ्रेड मौजूद है, either cotton or nylon or silk. अगर हमको जिस तरीके का खाना है, either vegetarian or non-vegetarian, is available in the world around us. Right? You want to eat sweet, sweet products are there. Variety of sweetness, jackfruit sweetness, mango sweetness, sugar sweetness. Right? You want to eat sour, lemon sour, orange sour, varieties of pineapple sour, varieties of sourness are there. You want to eat something bitter, Bengalis like bitter things. So there is Karela, and then you have that beautiful sabji. I don't know what it's called. It's made with Karela milk and so many varieties of sharks are there, very healthy and nutritious. And if we want to eat pungent, you can imagine, right? There's so many varieties we have. Whatever you want to do, if you want to see waterfalls, they are there. If you want to see jungle is there. If you want to see tigers, they are there. If you want to see innocent animal, cows are there. If you want to see loving pets, dog is there. Whatever we can imagine at any level is provided to us unconsciously. हम जब पैदा हुए थे हमने सोचा नहीं कि ये होना चाहिए तभी पैदा होऊंगा. हम पैदा हुए जो भी डिजायर आता है, that is available for us. Right? We just have to do some manipulations and it's ready. The question should be, आपको हमारी जरूरतें कौन प्रोवाइड कर रहा है? मम्मी हमारी जरूरतें इसलिए प्रोवाइड करते हैं because they love us. Isn't it? Our parents provide for our needs because they love us. They need not provide the needs of our neighbors. Here, there is someone, if we think, is providing the needs of everyone. Isn't it? Indian, American, Pakistani, Bangladeshi, whatever animals or birds or insects, whatever they also want is provided. Who has done that? He must be a very loving personality. He must be a very kind and generous person, entity or energy. Let us put this in form of a question. And how great it will be if we can strike a relationship with him. तो व्यक्ति इतना प्यार करता है कि हमें हमारी सारी जरूरतों की चीजें दे दी. ऑक्सीजन का भी क्राइसिस हुआ था. हमको तो ऑक्सीजन ऐसे ही मिल जाता है. हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काटने पड़ते. गवर्नमेंट के सामने हाथ पांव नहीं जोड़ना पड़ता. बिना हाथ पांव जोड़े ऑक्सीजन मिल रहा है. चूहे को भी मिल रहा है, गाय को भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, छोटे बच्चे को भी मिल रहा है. बूढ़े कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोई प्रोवाइड कर रहा है? इट्स क्वेश्चन. और अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है, कितना लविंग और काइंड पर्सन है, वो कितना जेनरस पर्सन या एनर्जी है. हाउ ग्रेट इट विल बी इफ आई कैन हैव द फ्रेंडशिप or a kind relationship with this kind of entity, this generous entity. It will be almost the success of life. Don't we like a friend who can provide us with the notes in the back of our examinations? We like him. Don't we like the friend who can solve our doubts and help us out from the most critical and crucial physical, emotional, or mental dilemmas? Sure, we like him. Here is a chance to meet that supreme friend who can pick us out from all the situations, help us out in all the circumstances, and is surely the most kind, generous, and the loving person. So that is and more the topic today, connecting with the divine. But before connecting to the divine, I would like to answer a very basic question which is often in the mind of people. That is, do that divine exist? मैंने क्या है थोड़ा ग्लोसी भाषा में बोला तो लोगों को डाउट नहीं आएगा. नहीं तो बोलो God does not exist. I'm atheist. Atheist means बड़ा कॉलम. So every year, a religious perception index is made by one German society. Every year I read that report and it actually comes in this month of July only.
So when I was in 2014, entering into my college days, the perception index has shown that atheism is increasing in India. Indians are becoming more and more atheist because they are seeing that the substitute of religion is present in the science. And especially amongst the youngsters, the belief in God is decreasing. So I was very concerned because I had some kind of belief in God, though my understanding was not very solid. But I was very happy from last few years when I'm reading that index report and all. It describes many things: casteism, um, gender perceptions of all major religions across country, state, and the globe also. So we are concerned about India anyway. So this year, from last few years, I'm observing, this year the report is 85% Indians now believe in God, and atheism is increasing throughout the world except in India. In India, atheism is rapidly falling down, and there is somehow or other a mysterious awareness amongst young people and the people in general about religion and spiritual practices. I was very happy by that, and I personally observed that change. As I also presented this message of Bhagavad Gita to boys and girls, uh, the challenges that God exists or not are rapidly decreasing. Some other people now believe in God. Either politicians or due to the pandemic or the situations arising in the society, people are getting forced to believe in God, or intelligent people are taking birth. I don't know. But yeah. So I don't know if you have the doubt or not if God exists. But I have seen that, a very major question, a kind of challenge in the second decade of 21st century, God's existence. Many movies came, right? Oh my God, PK, and this type. So there was a fashion of being an atheist, 2013, 14, 12. It was very rampant. Now, generally, it's not. So even if you don't have the doubt, God existence or not, we will discuss it today so that your faith, whatever is there, gets solidified and you get some basic arguments for substituting your faith or belief in the existence. Okay, so that's what I feel is the entry into the topic, and we will start the same discussion and rewind ourselves to the time of Newton. Since it's present in the slide, I think it's my duty. They have made such beautiful slides. I'm very grateful to this voice people, very innovative and you can say imaginative people. They really made very wonderful slides. Generally, whatever slides I have seen were huge, 100, 120 plates. But here, such deep concepts concisely and beautifully are presented with very appealing, relevant pictures, self-explanatory. Thank you very much, Akshay. If your team has done that, or I don't know if some other team has, but these slides are actually the best I find for device on it. They're very good slides. Okay. So Newton, his friend were discussing, and Newton was telling the same thing, that everything is getting provided by some person and we have to be grateful to him. And he said that that's God. And his friend said, no, God what कुछ नहीं होता है, ये सब चांस से हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है. कोई बोलता है समुद्र की लहरों को तुम बोल रहे हो, कोई बैठ के हिला रहा होगा कि वो आके टकराए, या कोई ऐसा होगा जो नल खोल के बैठा हुआ, नल खोलेगा तो बारिश होगा, नल बंद कर देगा तो बारिश नहीं होगा. ऐसा होता है कि नहीं, सब देखो कैसा चल रहा है. वाटर वेपर बनता है, वो ऊपर जाता है, ठंडा होता है, बादल बनता है और बारिश होने लगता है. Isn't it? ऐसा हो रहा है, सब चांस से हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है, कोई नहीं है पीछे. न्यूटन उसमें झगड़ा होने लगा, पर चूंकि वो अच्छे दोस्त थे, न्यूटन ने ज्यादा उसे आर्ग्यू नहीं किया, दोस्ती खराब हो जाती. बोले ठीक है, आज अपन ने बहुत झगड़ा कर लिया, कल अपन आप मेरे घर पे डिनर लेने के लिए आना. Then he said, okay, I will come to dinner. आपकी वाइफ अच्छा खाना बना. I don't know if Newton was married or not. Just speculating if he's married. ये तो रिसर्च कहाँ से करेगा, दिन भर खाना वाना बनाता रहेगा. Whatever. He came back at night, and what he saw on the dining table was a beautiful model of solar system. Sun was there, Mercury, Mars, Earth, Neptune, Pluto, everything, and they were just perfectly revolving in their orbit around Sun. And he was fascinated. He said, "My dear friend Newton, my God, you did it. आप इतना अच्छा इनोवेशन किया, आपने कितना अच्छा मॉडल बनाया. There will be no model than that, better than this before I have ever seen. You are the best person. इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए. इसको शोकेस में लगा रॉयल सोसाइटी में." न्यूटन ने कहा, क्या बोल रहे हो, मैंने थोड़ी बनाया है. My dog. Okay. हाँ, मैंने थोड़ी बनाया. My dog was playing with balls.
और वो क्या हुआ? Dog. Yeah, Newton said, my dog. Newton said, my dog was playing with the balls. We are playing, and I kept all the balls here on the dining table and went for sleep in night. And when I got up in the morning, I saw that this model was there. It came automatically, all the balls were there and just came up. This model I have not made, it has just come like that. And his friend said, are you fool? This beautiful model, everything so perfect, precise, with mathematical measurements and proportions, came automatically. How is that possible? I don't believe. You have made it. Don't kid it with me. And he said that if this is small, a mathematical put up, there has to be a creator. And that, my dear friend, I tell you, is God. Similarly, we see in the world around us, how many of us would like to go for beautiful sea beaches or waterfalls? Please put in the chat box. How many of you would like to go to some place of natural beauty, let's say Darjeeling Hills or waterfalls on beautiful places near Ganga, right? And how many of us like beautiful paintings, either natural expressions of Leonardo da Vinci, the natural pictures, the landscapes of Picasso, all these people. How many of us like that? How many of us like the beautiful sculptures made with fine-tuned expressions on the walls of ancient temples? Bengalis generally love art and cultural art. We all love them. If the beautiful person, for a beautiful painting, a painter has to be there with great imagination and skills. For sculptures, there has to be someone to carve them out precisely with precision. Why not? The real sculptures and the real scenery which provides with other artists to have their poor imitations should have artists, isn't it? Someone has to make that beautiful settings, right? It cannot just by chance. If Big Bang is right, and if Big Bang is the cause of the creation, how many of you feel that universe starts with Big Bang? How many of you feel that Big Bang is actually the reason behind the universe? Mohit, Vishwamitra, Shakshi, any one of you feel that it's Big Bang from where the universe has begun? Why no? Can you tell? Anyone here would like to volunteer? It's there since beginning. Then why it is ending? See, if you say that something is there from the very beginning, then what is that beginning and who did the beginning? Yes, Sakshi, please. Okay, Nishan, no problem. I will share that in talk. I can't repeat the entire story due to constraint of time. If Big Bang is the cause of universe, then why you people are doing engineering and get a job? Simply purchase some dynamites, go at the back door of your home, put the dynamites and have a blast. With the blast, a beautiful painting should come. You know, Howrah Bridge कैसे बनाया था अंग्रेजों ने, या विक्टोरिया मेमोरियल कैसे बना था कलकत्ता में? अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, उन्होंने डायनामाइट लिया, जमीन में गाड़ा, उसको फोड़ दिया, and it exploded. There was dust throughout. There was cloud of smoke, and as soon as the cloud and the dust were dissipated, what we saw was Howrah Bridge. What we saw was Victoria Memorial. Isn't it? You know, this is a fact. Puri Jagannath Temple, same way they did it. They went to Puri Temple 5,000 years back, kept some explosive, blast kar diya.
पुरी का इतना बड़ा टेम्पल है, हाँ, is this possible? And with just by explosion you can create beautiful buildings and all the symmetry, stop all the civil department recruiting the engineers and all those things, isn't it? Explosions have never systemized entropy. आप तो सब साइंस के स्टूडेंट्स हो, यू नो एंट्रोपी राइट, रेंडमनेस इन इवेंट है। ये पूरा दुनिया जो है ऑर्डर से चल रहा है, पीरियोडिक चांस नहीं है, पीरियोडिक टेबल है, isn't it? पीरियोडिक चांस नहीं है, क्या है? पीरियोडिक टेबल है, चांस से नहीं, वो सब एलिमेंट्स प्रॉपरली रखे गए हैं, उनका मास के और नंबर के हिसाब से प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स है, पीरियोडिक टेबल है वो एलिमेंट्स का। सिमिलरली नदी प्रॉपरली एक रूल के साथ फ्लो होती है, वाटर साइकिल एक रूल के साथ चलता है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, केमिकल रिएक्शंस, मेडिसिनल साइंस, सब एक रूल के हिसाब से चल रहा है। कितना कितना सिस्टमैटिक है, मैथमेटिकल है, ऑर्डरली है। क्या कभी ऑर्डर एक्सप्लोजन से क्रिएट हो सकता है? Isn't it? A order can never be formed by explosion. एंट्रोपी बढ़ता है एक्सप्लोजन से, रैंडमनेस आता है, ऑर्डर का डिस्ट्रक्शन होता है। हाउ? बाय एक्सप्लेनिंग एक्सप्लोजन, बिग बैंग, सच अ big and systematic universe has come. That's not possible, isn't it? चलो, even if Big Bang has happened, who did the bang? Is the question. बम फोड़ा किसी ने, किसने फोड़ा? अपने आप फूट गया, ऐसा तो होता नहीं है। आपने कितना दिवाली में सुतली बम खरीदा, वो बस फूट गया बम और सब बर्बाद हो गया? नहीं होता है, राइट? सिलेंडर, गैस, जस्ट इमेजिन इफ सब चीज ऐसे ही फूटने लगे, गैस सिलेंडर फूट जाएगा किसी दिन, what will happen? People will just randomly die. फूटता रहेगा, random, अपने आप फूटता है। No, someone is needed to do some mistake or make an intentional blast. Big Bang. Who did the bang? So all these reasons always point towards someone who has created. ठीक है, आप स्लाइड्स आगे बढ़ाते जाइए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्लाइड्स है। So Isaac Newton का स्टोरी था। Can we just go ahead with the slides? Yeah. वंडरफुल क्रिएशन अराउंड, आगे बढ़ते रहिए। मैंने सब समझा दिया, आप लोग सीधे देखते रहिए। एक नकली लोटस बनाना रहता है और रोज बनाना रहता है विद व्हाट ऑल यूनिट, केची, कागज, समवन टू मेक इट, राइट? और वो सिर्फ इमिटेशन होता है, दिखता है रोज जैसा, असली रोज नहीं होता है। रियल रोज खुशबू होता है, स्वाद होता है, गुलकंद वी ईट, राइट? शेप होता है, स्मेल होता है, ऑल द क्रिएचर्स गेट अट्रैक्टेड, हनी बीज एंड ऑल। सो समवन हैज टू मेक दैट, राइट? आगे बढ़ते रहिए। ये सब पेंटिंग्स है, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स, पीपल गिव करोड़ ऑफ रुपीस फॉर परचेसिंग, and then they will pollute the real places on the basis of this. Yeah, A for artist, who did the art? आगे बढ़ते रहिए। Yes, for satellite, what all things are needed? Simple. आगे बढ़ते रहिए प्लीज। Correct. So see, very simple thing is, if Earth is 1 meter closer to the sun, it will be a fireball. If it's 1 meter away from the sun, it will be a frozen ball. Who kept the Earth so precisely? Some of you may know basics of cooking. Roti banana rehta hai, right? If you put roti for a longer time in the stove, it will burn. If you don't put sufficiently over the stove, it will be kacha roti. So much precision is needed for placing the roti to make it round. Mother, they are very experts. Earth, so precisely kept. Moon, so precisely kept. Tides are very periodic and scientific functions. Eclipses happen. Time, everything is so mathematical. Who kept it in that order? Chaliye. Sir, are you in contact with His Grace Amok Leela Prabhu? No, I am not in personal contact with him, but he is a great person. Let us, yeah. And one more thing I will share, a very funny thing. See, recently, if you follow a little bit of news, around 30th May and 1 June, newspaper people were very happy. And the Meteorological Department of India was very happy. मौसम विभाग उसको बोलते हैं, बहुत खुश थे, बोले इस बार तो ऐसा बारिश होगा ना, पूरा
भारत खली खलियान होगा, सब हरा हरा होगा, सब अन्न धन्न भर जाएगा। इस बार तो भारत में उम्मीद से भी ज्यादा बारिश होगा, पूरे भारत में 20 दिन पहले ही बारिश शुरू हो जाए। How many of you read or heard those type of news? They were showing their graphs and charts and the maps. How many of you? You saw it? What's the scene now? It's blazing hot actually. I don't know if it's raining in Bengal, in whole North India, in Indore, in Delhi, in Gwalior, in Mathura. It's blazing hot, and now they're saying that no, rains will come 27th July, and this time it will be drought. Their science is so immature and imperfect, right? They don't know the exact reasons. They just make some assumptions. And on the basis of assumptions, they said God doesn't exist. I don't believe. One more thing recently is happening. Beautiful thing is happening in Canada and USA. You know, we all know they are cold countries. No? Canada is very close to Arctic Circle. How many of you know that they are very cold countries? Temperature never goes 25 plus there. Yeah, in Bengal it is raining, but in here it's full dry. MP, UP, nothing is happening. Just the point to say is science is never correct, precisely. Their all formulas are vague, and now they give some reasons of this winds and that wind. So who is controlling that flow of wind? Actually, it is very Bhagavad Gita. Krishna clearly explains how rain happens, and that's the fact which is observed. We may discuss tomorrow. Yeah. So one more thing is like Canada and USA, so cold countries, isn't it? Right now their temperature is 45, 49 degrees Celsius. My sister is in Chicago, Cincinnati. 4 months back there was a snowstorm there. Everything was just chalked up. Now it's blazing hot, 49 degrees Celsius, 50, 40, even that much I never observed in KGP, the blast furnace of India, I will say. Bengal is blast furnace of India. It's so hot and humid in Bengal. Even in Tamil Nadu, in Chennai, that much heat is not there, my dear friends. Bengal is really hot and it's blast furnace. Whatever, but it's 49 degrees Celsius there. Even in KGP and Calcutta, we never observed that. How that is happening? They are rich countries. USA, Canada are very rich and opulent. Hundreds of people are dying due to heat stroke and loo. India, Bhikkharis don't die out of loo. So many people on the roads, they just sleep and walk around. You may observe in Calcutta, Lucknow or Delhi. No one dies. Very rarely someone will die. Hundreds of people are just dying due to intense heat. There is a heat envelope formed over Canada and USA. Who is controlling that flow of energies throughout? It's a question actually. If science is not, science is happening, but वो जैसे लेबोरेटरी में हम डिसाइड करते हैं टेम्परेचर क्या हो, हम डिसाइड करते हैं पीएच वैल्यू क्या हो, हम डिसाइड करते हैं किस कंपोनेंट को किस बॉक्स में डाला जाए, isn't it? फिर वो रिएक्शन होता है, हम बोलते हैं हाँ ये हो गया, ऐसा तो पता था, ये फॉर्मूला प्रूव हो चुका है. Similarly, in this big laboratory of the world, who is setting the temperature? Who is setting the conditions of pressure, winds, components, and then we are seeing the results. Who is that who is controlling all this? So there has to be a aliens and those whole things they do. Okay, even if alien, then but there is someone, right? It's not just vague and void. It's God what we see. Ishwar, Bhagavan we see. Okay, आगे कंप्यूटर बनाने के लिए इतना ब्रेन चाहिए. हमारा ब्रेन जो है वो thousands of computers के बराबर है. किसने बनाया? ठीक है, आगे बढ़ते. Fast है. ये स्लाइड्स आप चाहे तो इन बच्चों से शेयर भी कर सकते हैं. Yeah, beautiful buildings बनाने हैं. Discuss कर सकते हैं. देखो एक और सिंपल सा चीज है, आप आगे बढ़ते रहिए, मैं बोलता रहूंगा, आप देख सकते हैं स्लाइड्स इफ यू वांट. In India, we walk on the left side of the road. America, we walk on the right side of the road. As soon as the red light is there, we stop. Okay, someone decides the timings of our college. Someone decides the dress code we should wear over there, isn't it? Similarly, we observe so many laws, the laws of thermophysics, the laws of optics, right? The laws of gravitation. Scientists have understood them, they have not made it, but in the end, who made those laws is a question. So against the flawless laws, there has to be a lawmaker. Yeah, I knew this part. Okay, first. So in this way, we all understand that
there is an existence of a supreme being or a super intelligent brain which is maneuvering over the functioning of the world, the creation of the world, the maintenance of the world, and even the destructions of the world. Okay, छोटा सा वायरस आया, उसने हमारे सारे साइंस की धज्जियां उड़ा दी, right? So someone is there much more intelligent who is looking at all those rules. These were the physical rules which we experience, feel, and we can relate it with the terms of science. But there are some rules like how many of you can choose what college you want to take admission? Please put in the chat box. किस कॉलेज में जाने का है? कौन डिसाइड करता है? मैं तो डिसाइड किया था मुझे किस कॉलेज में जाना है. Someone in the chat box, how many of you decided your own college? Everyone's sleeping? मैं लिखता हूँ. Mohit has decided his own college. We decided our college, right? Which branch to take? I decided. Which cloth to wear? I decided. Which watch to, which mobile to use? I chose it. How many of you chose your parents? This must be. Anyone chose their parents? Prabhakar, you chose your parents. You're a great soul. How many of us chose our face cuts? Kaisa lag raha hu? Everyone otherwise will choose. Virat Kohli I won't choose. I don't know why people like him. They feel he is handsome, they're sweet, but I won't choose Virat Kohli. Whom I will choose? Personal, I won't say, but we don't choose our face cuts. We can choose our wife. We can choose the kind of car we want or the design of our house, but do we choose our intelligence? We don't choose. It's just given, and sometimes we have to accommodate with that. Who control those subtle laws is very important. That is more important. Who controls those subtle laws which are sometimes in favor or in against? How they are decided. And actually that law is known as law of karma. Karma ka siddhant. That is karma, good karma, bad karma, papa, punya, all those things come in the picture. So that law of karma, who made it, who decides that? That's the thing which is very important. God decides that. Laws which are beyond our control. Okay. Another thing is, I have never seen him. Why should I believe? God, right now come in front of him. If God is there, let thunderbolt be on my head and I shall die. Right? People say like, Dikha, proof karke batao. Very nice. How many of you have been to America? Anyone? How many of you have been to America? Mohit, let's unmute Mohit. Mohit, I will ask you basic questions. You can unmute yourself. Yes, sir. So Mohit, you have never been to America. So No, I never went to America. Yes. So do you feel America exists? Yeah, it is there in the map, so it obviously exists. How? Okay. So through map, you know. So you are sure that that map is all right, correct, trustworthy? See, it is shown from the childhood, like when we were from when the geography started in our school. जो टेररिस्ट होता है उसको बचपन से कुछ तो पढ़ा देते हैं. वो समझता है कि बंदूक चला के जितने लोगों को मारूंगा मुझे उतनी गर्लफ्रेंड्स मिलेंगी स्वर्ग में जाके. तो वो सही सिखा रहे क्या उसको बचपन से. So that one तो I don't know because I have never, हमने कभी देखा नहीं उसको. But अमेरिका तो it's there in the map. जब से geography पढ़ रहे तब से है. तब से पता चला कि you kept faith on a book, right? Yes. Okay. Another thing is you have seen America through TV. Means someone was in America or someone had been to America and he showed you some pictures or some proofs of it, right? Yes. Okay. Have you ever been to moon? And it happened. Where? Please repeat. Yeah. Let us take up Nishant now. Just yeah, Mohit.
think that's why America exists. Do you have been to moon? अमेरिका तो छोटा मोटा देश है. आप चंद्रमा पे गए? Sir, in moon also we send satellites and आप हाँ में या ना में जवाब. हाँ या ना में जवाब. आप कभी ठीक है चलो उसको भी छोड़ो. जुपिटर गए. जुपिटर पे सैटेलाइट भी है. Have you ever been to Jupiter? Yes or no? no. Jupiter exists. Yes. How? We get satellite images. There is someone who has access to Jupiter. He shows you something and you believe in him, right? Yes. So again, it's not. आप कभी flight पे बैठे? Anyone here who was in airplane ever? No, Maybe sir. must be. No, I'm telling anyone here who has been to flight. कोई भी हो सकता है. कोई भी नहीं. Very fortunate, but still I'm asking. Okay, no one have. Okay, train में तो बैठे होंगे सब, right? We all sit in train. Okay, Prabhakar has been to flight. Let us ask Prabhakar. Prabhakar, you can unmute yourself. Prabhakar? Yeah. So Prabhakar, when you book the flight ticket, Yes, are sir. you sure that it's a genuine ticket and there is a kind of flight like that and they will take you to your destination? Do you have some faith? Some ये kind कैसे of होता है? letter? अरे भाई होता है तभी तो 5,000 रुपए देते हो. ऐसे Sir, थोड़ी देते हैं. I have one question, sir. Yeah, just a जैसे minute. कि Question sir, I will take. आपने Just बताया कि question I will take. Jupiter को अरे देखे भाई, नहीं. just a minute. Question I will take. But first, this is my opportunity to ask you a question. So when you purchase 5,000 rupee ticket, you put faith on the website or the flight service company or not? Prabhakar. Prabhakar, I'm asking you. Are you there? Okay, can you repeat the question, sir? Oh, शाम को When you जो purchase होता a है, flight, तो when you purchase a flight ticket, you put faith on the service provider and the website, right? Train में भी जब आप ticket लेते हो, we take the ticket and we put faith on the organization. Similarly, जब हम flight में बैठते हैं या train में बैठते हैं, do we always sit with a compass? देखो सही direction में जा रहा है कि नहीं, north जा रहा है ना, south तो नहीं जा रहा कहीं, isn't it? We do like that. We just simply sleep, right? Or if we are in the train, you simply be cozy, chat around and have a good time pass, isn't it? Unknown destinations. Yes, sir. Yes. Similarly, Yes, sir. what all I'm constructing slow by slow is I'm raising question in your mind. How can I believe in God if I don't see Him? Okay, so I will answer actually all of them in one go. So, जल्दी हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा. चलो, fourth question. First question I asked was America. Second I asked was Jupiter. Third Sir, about airplane. मेरे पास एक question है, sir. No, I will take questions in the Can end. I ask, sir? Yeah, I will take question answer towards the end. Don't worry. I will give sufficient time for it. Okay, sir. Okay. Sure, you please there. Chalo. Third, let's say fourth thing is, Okay, sir. this is all beads you're seeing, right? You're seeing all these pearls. See, right? How they are together. Yes. Because they are together on the basis of a thread. है कि नहीं? Same thing Lord Krishna says in Bhagavad Gita. Matta parataram nanyas kinchid asti dhananjaya mai sarvamidam bhutam sutre managanaya. It means that I'm exactly like this thread. This thread is actually sustaining all the pearls. But people are not able to see the thread. Though this thread is the basic foundation that we see a beautiful garland or a string of pearls. That is seeing the seen, unseen through seen. Pearls are sustaining on a thread. Similarly, we see so many things in order, the things taking place according to proper precision and all. It means that there has to be a basis of it. God exists. God, why is not coming in front of him? If God is there right now, let him burn my head with thunderbolt and all. क्या मैं भी चीखने लगूं मोदी को यहाँ बुलाओ मोदी को गोली मारूंगा नहीं तो there is no Modi. Is Modi bound to follow my dictation of coming in front of him? Do I have that qualification and authority to call or summon him like that? No. Similarly, God is not our order here, and we are not so great like we can summon him and he will just come down and
present himself to our disposal. It's not boundary. Another thing is, my dear friends, as you put faith on service provider of train or air service, you put faith on your college that this is an engineering college and in the end I will get an engineering degree. I won't get a diploma degree or I won't get a medical degree. You put faith always. There is known as Adho Shraddha. The preliminary faith has to be found. We have faith. If you want to plant a tree, उनको विश्वास होता है कि ये बीज डालूंगा तो उगेगा. Preliminary faith is actually the beginning. No one can instill it in that you. It is obvious in someone in his subconscious and conscious mind, as Akshay was telling in the beginning. Faith we have to put somewhere. That faith has to be on authority where we are sure that won't be cheated. America, we have never seen it. Jupiter, we have never seen it. We know about it. How? As Mohit said, through book. Through someone who have been there, took the photographs or who has some knowledge of it. Photographs were not there in 18th century, but who can speak or write about it. So, basic thing of knowledge is writing it from very beginning till today. What is print media? It's nothing but from paper, it is now written on a PDF or a soft format. Similarly, about God, how do we know? We have never been to his kingdom. We have never seen him face to face or interacted with him. We know through those persons who have been with him in his kingdom, who are his personal associates and who have come to our access and all for giving us the same knowledge, or who have the authority to speak about him, and they are actually known in our culture as Acharyas. Madhvacharya, Ramanujacharya, Chaitanya Mahaprabhu, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Nimbarka Acharya, Shankar Acharya, isn't it? Shankar Deva Pasam, Tukaram of Maharashtra, Narsi Mehta. You see this person. How do we check that real acharyas and all is a very big discussion. How to distinguish between bogus and real sadhu. Still, there are people through their actions, examples, through their demeanors, through their activities and writings, we see that these are out of the world people, something very special. And through those authorities, we come to know about the inaccessible place, the kingdom of God, about God, Jesus, even Prophet Muhammad. Messengers, isn't it? We believe on the existence of Jupiter, and there is a Statue of Liberty in America, and there is something as Joe Biden, and there was someone as Donald Trump. Similarly, about God, we can know through this acharyas, through their writings. And you see the map, or you read about Jupiter in a thesis, that's the books which are known as scriptures, shastras, holy books, scripts. So these are the sources to connect with God. Many ways we can know some things. One thing is direct observation. We can go ahead with the slides actually. मैं सब जो slides में वो बोल रहा हूँ, but आप slides देखने बोर होके सो जाते हैं बच्चे. So let's say slides are there for information. You can just look at for revision. Otherwise, generally I speak and it's a kind of discussion. Anyway, I'm going to wind up in 3 minutes. Directly seeing the things. I saw calculator. Okay, there's a calculator. Okay, I saw pan. This is a train. I read on the train. Calcutta to Indore. Howrah to Indore. Shipra Express. I believe it is a train. I boarded it, right? But we have observed many times our senses are imperfect. जैसे कि एक स्टिक को अगर पानी में डालता हूँ तो क्या लगता है वो मुड़ी हुई है, टूट चुकी है. ऐसा नहीं है. क्या लगता है सड़क पिघल चुकी है गर्मियों में, पर वो पिघली नहीं. मिराज का फिनोमेना. Our senses are imperfect. हमारे जो कान है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज सुन सकते हैं. Okay. So our senses cannot get the complete knowledge. तभी तो हमें माइक्रोस्कोप लगता है. Even माइक्रोस्कोप अगर इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है, अल्टीमेटली तो हम उसे अपनी आंखों से परसीव करेंगे ना, और आंखें लिमिटेड है. There is always prone for errors. Second is अनुमान प्रमाण. We contemplate about it, we think about it and we understand. Corona is the greatest example of that kind of research. बहुत अनुमान लगाया, पहला वेव, दूसरा वेव, ये वेरिएंट, वो वेरिएंट, ये वैक्सीन, फलाना ढिमाका, भारत तो जीत गया, अमेरिका तो हार गया. So many anumans, everyone's anuman got futile and frustrated. Anuman praman is, I don't think anyone should have any faith on anuman praman. You please go ahead first. We are on very last slides. What is the most authentic one? Let us again understand it from basic analogy.
How do you know who is your father? We know mother because mother gave us the birth from the womb. It's very evident and it's clear. How do you know who is your father? Anyone? Genetic research you can do, right? How many of you will go for a genetic research of all the human population, finding out who is my father? Put in the chat box, please. How many of us? No, we won't go that. Basic understanding of it. You can directly go to the last slide actually. To know about the God especially, it's not everyone's right. In India, people think that anyone and everyone can speak and comment about God. Shiva is God, Kali is God, Kali Kirtan, Shiva Kirtan, Ganesh Kirtan, Kartik Kirtan, Indra Kirtan, Varuna Kirtan, so many things that do, random things people do. Everyone is God, all are God, this Baba is God, this lady is God, this is Ma, this is Bapu, so many things. People get cheated. This mullah is God. Muslims and Christians also have so many misconceptions. So many. It's not just Hindu society, it's spread. The problem throughout human civilization. Nothing special about it. Cheaters. Who is that authority? How should I know? How should I know that? So simple thing, and I will myself do it. I won't go to any authority. खुद से पता लगा लूँगा किताबों को पढ़ के. My difference. There are 4 lakh verses in Vedas. How you will read them? This human form. And we have no knowledge of Sanskrit at all. It's practically impossible to read the Vedas and know about existence, the nature of the qualities of God. How do we know that? You have to study from somewhere. And now, how to know about the teacher? Even one more thing, let's say आप Google पे NPTEL के lectures है ना, सब उसी से पढ़ते हैं. NPTEL के lectures देख के अगर आप बहुत बड़े engineer बन जाओगे कि आपको Microsoft Google job देगा? नहीं देगा. आप बहुत महान वैज्ञानिक हो, आपको बहुत अच्छा बुद्धि, आपको सब कुछ आता है. पर आपके पास एक कॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं है, आपको जॉब कोई नहीं देगा दुनिया में. Isn't it? So we need an institution where we have taken formal education of the science. Then we are eligible for entry at higher levels. Same applies to the spiritual science. ऐसा नहीं है कि हम यही रोक दीजिए बस. ऐसा नहीं है कि randomly भगवान ने साइंस को बना के छोड़ दिया. अगर मैं बीमार हूँ तो मैं सिविल इंजीनियर के पास नहीं जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा. अगर किसी को घर बनाना है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, सिविल इंजीनियर के पास जाएगा. सिमिलरली जब किसी को स्पिरिचुअल साइंस पता करना है तो उसे स्पिरिचुअल अथॉरिटी के पास जाना. उस स्पिरिचुअल अथॉरिटी का क्या इंस्टीट्यूशन होना चाहिए? तो भगवान विष्णु ने, who is the supreme personality of Godhead, or Krishna, who is supreme personality of Godhead, in the beginning of the creation itself, made 4 colleges, 4 institutions, 4 bona fide institutions for delineating the spiritual knowledge, the knowledge about God and the eternal existence. These 4 colleges got 4 HODs, Brahma, Shiva, Narada and Lakshmi. And in that college comes the line of the teachers and the disciples. If someone teaches you that there are 2.5 laws of Newton, will you believe him? Hear attentively. If someone tells you that there are 2.5 laws of Newton, will you believe him? Put in the chat box. 2.5 laws of motion. Will you believe him? No. Why? Newton did not say that. It's not written in the book. Isn't it? Yeah. How we believe a teacher is, we check if he is speaking, is written in the book or not. How we check a teacher is we see, is it matching with the principal originator of the theory? So this triangle inequality has to be balanced. Books should be matched with what the person is speaking, should be matched with this acharyas you're seeing like Brahma, Narada, Chaitanya Mahaprabhu are speaking. That's why if someone wants to get true spiritual knowledge, otherwise it gets cheated. The bogus concept is very popular in Bengal. Machli khao, bhagavad kham chao, anyone will say anything, and where it's written in the Shastra. Books में बताओ, तुम तो बोलते 2.5 लाख न्यूटन का, किस किताब में लिखा है? या न्यूटन ने ऐसा कभी बोला? Ever Lord Narayana said that
या तो मतलब तो पर मछली खाओ, थाम जाओ. Sorry if you get off here, but we can debate over it. We can debate over it. So this triangle inequality has to be solved. Then one can trust the spiritual teachings he is getting, and when he will apply this true knowledge, coming in these proper institutions, he will get the results. Can you go ahead? So it's exactly like the college. HOD है, professors हैं, हम उसके students हैं. आप अच्छे से पढ़िए, उस science में PhD करिए, आप भी teacher बन जाइए. No one is going to stop. Okay. In this way, we cover the existence of God and the knowledge of God. Why we should know about God? Basic सी चीज, simple चीज से बताता हूँ. Small story, I will wind up in 1 minute. Race हो रहा है between myself and Akshay. The race is from Calcutta to खड़गपुर. अक्षय के पास है Mercedes Benz, और मेरे पास है खड़गपुर की 3rd class 2nd hand cycle. रेस शुरू. सांतरागाची से अक्षय अपना गाड़ी लेके भाग, मैं साइकिल से धीरे 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 जा रहा हूँ. कौन जीतेगा रेस? अक्षय will win the race और myself will win. मैं जीतूंगा साइकिल से कि अक्षय जीतेगा? अक्षय पहुंच चुका है कोलाघाट तक. गाड़ी बहुत स्पीड से जा रहा है. आधे घंटे में KGP पहुंच चुकी. मेरा साइकिल से चलते चलते मैं बड़े मुश्किल से सांतरागाची का ट्रैफिक जैम में पास. इतने में क्या होता है, डुक 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 हेलीकॉप्टर आता है. वो हेलीकॉप्टर मेरी साइकिल को उठाता है और डुक 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 करके उड़ने लगता है खड़ा. नाउ हु विल विन? अक्षय विल विन और आई विल विन. अब मैं जीत, बासी पलटी कि नहीं? Same is with God. It's painful, it's risky, it looks very dangerous to ride with a helicopter, but it's ये क्या है? ये thrill है, adventure है, जीतने का formula है. Same is this path of God realization. We can get all the success in our life if we have that support, friendship, and loving relationship with the Supreme Person, who is the proprietor of everything, who is controller of everything, who is the best, well-wishing friend of everyone. In this way, if you tap the power of divinity, success is short and sure. My helicopter is God. My helicopter is Krishna. And no one else. That's why I request you to be attached and continue with this journey to understand more secrets about the divinity and tap into the power for achieving the success. Thanks a lot. I think I took 5 minutes extra than planned. And for 5 minutes you can take question, and there are some announcements. Yes. And Thank you. had some question, I think. Okay. So first of all, I thank you, sir, very much for this wonderful session. बहुत बढ़िया जबरदस्त सेशन दिया सर. बहुत कुछ सीखने को मिला for Tomorrow everyone. we will have the scientific things from Vedas. Like people may point out to Vedas that they are outdated and why we should believe them and all. So we can understand some glories of the Vedas, so that we feel that they are not just the rudiments, but there are many things which are proven, which like even people accept, and Vedas have a crux of knowledge. Okay. We will discuss with Vedas tomorrow. That will be around 12, I think. So just one announcement, sir. Tomorrow's session will be at 12 o'clock, everyone. 12 o'clock there will be a session on infallible Vedic wisdom, 12 to 1:15. And we are giving you one more chance. जो लोग अभी लेट आए हैं या जो सेशन मिस किए हैं, one more chance that you will be having this session repeat tomorrow evening 6 o'clock. ठीक है? So don't miss it. Tomorrow 12 o'clock will be at session number 3. एंड जो सेकंड सेशन जो हुआ है इसका क्विज आपको आएगा ट्यूसडे को. तो ट्यूसडे यू हैव टू टेक अप अ क्विज ऑन व्हाट यू हैव अंडरस्टूड टुडे फ्रॉम द सेशन. इट विल हेल्प यू टू प्रैक्टिकली अप्लाई दिस थिंग इन लाइफ. ओके, सो प्लीज टेक इट सीरियसली एवरीवन. एंड नाउ यू कैन गिव अ सेकंड अटेंडेंस इन द चैट द सेम वे, योर नेम, योर डिपार्टमेंट नेम, योर कॉलेज नेम एंड योर सेक्शन एंड डिवीजन डिपार्टमेंट. ओके, क्वेश्चन आंसर कर लें अभी. Yes. Anybody is having any question? You can Prabhakar had question.
I fear Bengali. Yeah, sir. I am asking that. Sir, आपने कहा था कि जुपिटर वगैरह है, उन सबको हमने नहीं देखा, पर उन सब के लिए ना बहुत प्रूफ्स है. जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवान के प्रूफ्स के लिए वहाँ पे पता नहीं कौन सा बुक्स है, किसी और चीज वहाँ के पे proof लिखा के था लिए कि चार मतलब लाख जैसे कि 4 लाख Yes. लाख श्लोक हैं. 4 लाख लाख आप समझते हैं? 4 into 10 to the power 10. एक श्लोक में ऑन एन एवरेज आप 2 लाइन भी मान लोगे तो 8 into 10 to the power 10. क्या इतने Sir, proof हैं? वो श्लोक क्या आप भगवत गीता की बात कर रहे हैं? 700 श्लोक. आई एम टेलिंग नहीं, वेदस. मतलब भगवत गीता में जो है, मैंने जितना ऑब्जर्व किया, उसमें ऐसा लगता है कि एक इंसान को कैसे सही तरह से जी सकता है, which words? ये लिखा हुआ है. Which words? मतलब हाँ, with words. बट मैं ये Which words? बोलना I'm चाहता हूँ, just मेरा asking क्वेश्चन you. ये है कि मतलब जैसे कि हवा है, उसको हम देख नहीं सकते, तो उसका प्रूफ्स है ना, मतलब बहुत सारे केमिकल प्रूफ्स एंड वगैरह वगैरह. जैसे भी जुपिटर वगैरह, फिर आपने यूएसए के बारे में बताया, सबका प्रूफ्स है. पर See, आई बिलीव इन गॉड, बट Today कभी I कभी told like so you remember, लगता yeah, you can write down this 5. Actually, I have discussed this for 40 minutes in the session today. Maybe I should summarize it. So you write down wherever you have A, B, C, D, E, F. What you should write down? A, B, C, D, E, F. Okay? You remember this acronym, existence of God. A means art. Art has to be an artist. From somewhere. Yes, sir. Okay? So much art we are seeing, the natural art around us. Who is the artist? B is यस सर. beautiful organization. फिर से मैंने 10 बार बोला आपको, वाटर वेपर, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सीजनल साइकिल. ओके, एनिमल किंगडम, हाउ दे वर्क, प्लांट किंगडम, द फॉर्मुलेशंस, है ना, how the human body works from inside and outside, isn't it? Beautiful organization. Who is the organizer? ठीक है. C means creation. यस सर. ने देखा था, लैपटॉप देखा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखे, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स देखे, क्रिएशन देखा, सुंदर सुंदर क्रिएशन. हु इज द क्रिएटर? डी, डिजाइन देखा. इंसान ने एक मच्छर नहीं बनाया आज तक. नहीं सर, वो लैपटॉप वगैरह तो इंसान नहीं या बनाया. लैपटॉप इंसान ने बनाया, बट आई एम टेलिंग मच्छर किसने बनाया? कितना अच्छा हेलीकॉप्टर है मच्छर, छोटा सा हेलीकॉप्टर, वेल मछली. वो तो सर वैसे अगर बायोलॉजी के थ्रू जाए तो डार्विन. वो तो सर. डार्विन. हाँ सर. एक बंदर देखा है आपको आज तक मनुष्य बनते हुए? डार्विन के पिताजी बंदर होंगे, मेरे तो नहीं. पता नहीं सर. तो डार्विन ने पर साइंस तो ऐसा ही बोलता है. साइंस का डेफिनेशन क्या है प्रभाकर? जो मतलब जो रियल, मतलब जैसे कि नेचर का जो सच है उसको सामने लाना, उसको स्टडी या किस बुक से बोल रहे हैं आप ये साइंस? देखो अभी हमने डिस्कस किया ना न्यूटन का 2.5 लॉस. जो बोलेगा मैं उससे पूछूंगा किस किताब से बोला, न्यूटन ने क्या बोला. इसे आप जो साइंस का डेफिनेशन दे रहे हैं उसका ऑथेंटिसिटी बताइए. देखिए ये बहुत बड़ा ट्रिक खेलते हैं लोग हमारे साथ. लोग नहीं चाहते, लोग मेनी पीपल डोंट वांट दैट गॉड कॉन्शियसनेस शुड स्प्रेड. दे डोंट वांट टू बिकम गॉड कॉन्शियस. क्यों? जैसे आप गॉड कॉन्शियस होंगे, पता है क्या होगा? दुनिया का बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगा, कोई झगड़ा नहीं होगा. वॉर इंडस्ट्री खत्म, वाइन खत्म, मीट खत्म, पॉर्न इंडस्ट्री खत्म, ड्रग इंडस्ट्री खत्म. Who wants that? Demons don't. So they don't want to do. पूरा साइंस बंद हो जाएगा. नॉट मीन दैट सर जो हम लोग साइंस में पढ़े वो सब कुछ गलत है. नहीं, so I am asking you very simple. So I am not telling ever that. मैंने कभी बोलता ही नहीं उसको. मैं कुछ एक लैपटॉप पे बात दे रहा हूँ जो कि सुपर साइंस का. मैं तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, साइंस क्या है आप मुझे बताओ ना. Then we will discuss. आगे का बातें तो देखेंगे. Science is like मतलब anything happen. One more thing, Prabhakar. Let us do one simple thing. Let us be honest. है ना, लोग चीटिंग करते हैं ना अभी इतने इस सीरियस मैटर में चीटिंग नहीं करते. आप जो आंसर दोगे ना, if you give answer ना, think and आप खुद से बोलना you are satisfied with your answer or not. फिर अपन डिस्कस करेंगे. Honest. Otherwise point क्योंकि मैं इतना डिबेट किया लोगों के साथ, I realized one thing. Someone is dishonest. He is पक्का atheist. Become atheist. Get kicked off. Kicks of nature. So be honest. And science का आप ही definition बोलो और फिर आप ही बोलो आप उसको कितना रेट करोगे 10 मार्क्स में. 1 मार्क्स दोगे, 0 दोगे, 5 दोगे, 10 में से 10 दोगे. आप बोलो. जैसे कि सर मुझे तो बचपन में से साइंस पसंद था, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि जैसे कि दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया, जिसमें
Okay, I told Bengalis are very philosophical, very nice actually. But now the next question: how much you are satisfied with your definition? 10 में 9 दूंगा मैं. You are giving to yourself, becoming dishonest, but it's not satisfying equation. You yourself know that. Science means a set of theory which can be realized in practical. ठीक है? Yeah. ये डेफिनेशन से सेटिस्फाइड हो कितना दोगे इसमें 10 में से? 9. 10 है ये, क्योंकि ये आपके जो रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन है ना उसका डेफिनेशन है साइंस का, मॉडर्न साइंस का डेफिनेशन यही है. सो इवन इफ यू डोंट गिव इट्स द पक्का डेफिनेशन. इट इज सेट ऑफ द थ्योरी व्हिच कैन बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिकल. दिस इज सिंपल एंड इट्स जेन्युइन. एक्चुअली साइंस आप जो बोल रहे हो दुनिया को देखने का नजरिया, तो कई सारे ऐसे ब्रांचेस ऑफ साइंस है जो नेसेसरली दुनिया को देखने का नजरिया नहीं. आप जो बोल रहे हो फिलोसॉफिकल बोल रहे हो, फिलोसफी में अप्लाइड है, सोशियोलॉजी में अप्लाइड है, साइकोलॉजी में अप्लाइड है, जरूरी नहीं वो सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाइड हो. मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं दुनिया को किस नजरिए से, इलेक्ट्रॉन का नजरिया क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, वो तो so it's an incomplete definition, right? It may be applicable to philosophical domains, no problem. Science set of theory, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स सेट ऑफ थ्योरी है, अप्लाई करते हो सेम रिजल्ट आएगा. इलेक्ट्रिकल, मैथ्स साइंस क्यों है? सेट ऑफ थ्योरी है, अप्लाई करते हो रिजल्ट आता है. सोशियोलॉजी या फिलोसफी आप जो बोल रहे हो वो साइंस के, उनका भी थ्योरी होता है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी, फिलोसफिकल थ्योरीज, राइट? एथिकल थ्योरीज, मॉरल थ्योरीज, वो आप अप्लाई करते हो सर्कमस्टेंसेस में तो उसका रिजल्ट आता है. सिमिलरली स्पिरिचुअल साइंस क्या है? स्पिरिचुअल साइंस के उनके सेट ऑफ थ्योरीज, डेफिनेशंस और प्रैक्टिसेस हैं जो कि उनकी किताबों में दे रखे हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स की किताब में क्या मुझे मॉरल एथिकल थ्योरीज मिलेंगे? नहीं, कभी नहीं. डार्विन की किताब में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल का क्या रूल होता है, V = I, वो भी नहीं मिलेगा. तो फिर जो फिर अगर हम सब साइंस की ब्रांचेस को उनका अधिकार दे रहे हैं, तो आप स्पिरिचुअल साइंस को ऐसा एलिनिएट करके पब्लिक क्यों बना रहे हैं? उनका खुद का थ्योरीज है, सेट ऑफ रूल्स है, प्रैक्टिसेस है, उनको अप्लाई करो, आपको रिजल्ट मिलेगा. एंड दैट इज स्पिरिचुअल साइंस. I'm not telling that all this science is wrong. I am telling that it's wrong when an electronic scientist unnecessarily pass a derogatory comment about a spiritual scientist. That is not okay, sir. That's not your domain. ठीक है? डार्विन भाई साहब, आज बायोलॉजिस्ट हो, आप आपकी एक थ्योरी तो प्रूफ नहीं कर पाए. आपकी किताब में आपने शुरू में ही लिखा कि ऑल इज असम्पशन. डार्विन बोलता है एक भालू था, भालू को भूख लगी, भालू अटलांटिक में कूद गया, उसको बहुत भूख लगी थी तो उसका मुंह खुला हुआ था. ठीक है? और फिर भालू ऐसे खाता गया, मछली को खाता गया, और जब वो बाहर निकला तो व्हेल बन चुका था. If this is science, I don't know. Yeah, sir. भी मतलब हर साइंटिस्ट ऐसे ही assumption और evolution क्यों है फेमस? क्योंकि अगर आपके पूर्वज बंदर जैसे थे तो आपको बंदर जैसा जीवन जीने का अधिकार है. अब आप बताओ बंदर कैसा लाइफ जीता है? I think Europeans and Americans are living like that, most of them, not all, most of them. And Jesus told them that don't live like cats, dogs, and monkeys, so they hanged him, crucified him. So that's the reason. Okay, sir. Okay. अभी आप बोलो नहीं देखे तो मैं उसको कहूँगा T for design है, 3 for creation. ये आप अपने जीवन में ऑब्जर्व करना. बहुत सारी चीजें हैं जो कोई क्रिएटर नहीं है, कोई डिजाइनर नहीं है, एक हायर इंटेलिजेंस है. F हमने डिस्कस किया, लॉज ऑफ ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, राइट? फ्लॉलेस लॉ, ऐसे नियम जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता. यहाँ रेड सिग्नल तो आप तोड़ सकते हो, राइट की जगह लेफ्ट में चलोगे कोई डंडा नहीं मारेगा. फ्लॉलेस लॉ, सर लॉ मेकर. ठीक है? हाँ सर. और सर मैं अपना एक खुद का प्रॉब्लम बताऊं? यस, जस्ट अ मिनट. ये पहले फॉर्मूला लिख लो आप रिकॉर्ड का पूरा, ताकि आपको डाउट नहीं आए. और ई मतलब एनर्जी, सन एनर्जी किसकी है? सन की है. ठीक है? हीट एनर्जी किसकी है? फायर की है. जो दुनिया भर की एनर्जी है किसकी है? सो देयर हैज टू बी एनर्जेटिक. सो दिस इज ABCDEF. आर्ट, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटर, डिजाइनर, एनर्जेटिक एंड फ्लॉलेस लॉ मेकर. गॉड. ओके, किसी और के पास सब्स्टिट्यूट हो तो बताओ, हम आपका एक्सेप्ट कर लेंगे. जब तक नहीं हमारा एक्सेप्ट करो. ठीक है? ओके सर. तीसरा चीज सर वैसे ये यू आर अ इंडियन. पूरा आंसर सुनिए, ये बहुत सारों का डाउट होगा, मुझे पता है. आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. If Vedas are not right, if God does not exist, if Krishna is not God, if Krishna is not God, then all the Vedas are wrong. All the acharyas, Shankar, Ramanuja, Madhva, Nimbarka, all are bogus. All the saintly people doing so many austerities and beneficial activities for
throughout the people in the world are charlatans and cheaters. All the good people who believe in God and always do the good activities are the fools. Anything can happen in this world, but this is impossible. This can never happen. God exists. Krishna. या Okay. चलिए आगे पूछिए. सर वैसे सॉरी आपसे डिबेट कर लिया. हाँ, no problem. मेरे आई एम सो क्यूरियस सो इसलिए. हाँ यार, you वो know, सर, I like जैसे ना this. वो आप सर- बहुत humble हैं actually. जैसे कि अभी मैंने ये बताया, ये मेरा ना ओवर थिंकिंग का बहुत प्रॉब्लम है. कभी कभी ज्यादा ही ओवर थिंक कर It's लेता not हूँ. आप problem. अभी सोचने लगा था कि शायद आपसे डिबेट करने के लिए आपको बुरा मानना. No. I don't feel bad. Debate is good actually. See, there are four. I'm not debating with Yeah. you, sir. I'm just curious about Yeah, no, God. In Bhagavad Gita 10th chapter, one place it's there are three kinds of discussion which happens: Tand, Vitand, and Vivad. Right? So, Vitanda means the opposite personality is obstinate. वो कुछ सुनेगा ही नहीं. He's not open to the ideas, and he's just fixed Yeah, on sir. it. That's time. That is Vitanda. As people Vitanda. do. Yeah. So they don't respect them. Then another is Vad Vivad, which is the mutual discussion, which we see now, is Shastra, like in older times. And whomsoever will see that opposite party, his arguments are well established and all, he will follow them. He will humbly accept it. So that Vad Yes. Vivad is good, Vitand is wrong. So Vitand ka formula be honest. Yes. Honesty है तो फिर आप accept करोगे. नहीं है तो फिर नहीं. कहाँ है बता. नहीं ऐसा तो करते. दिख के भी दिखा दें ये गलत है मैं ही सही हूँ. No problem. Thank you. Aditya has some. Officially, I hand over here. Okay, sir. Thank you, sir. Hana, those who want to leave can leave. Those who have question can ask. You can Thank you, decide. sir. Sir, Have a I good have a day, question, sir. Yes, please ask. Aditya. सर आपको बंगाली समझ में आता है क्योंकि मैं आपका सरनेम देखा मिश्रा तो मुझे लगता है I am not from ठीक है। Bengal, but I can understand. सर आपने बोलें ओके तो आपने सर बोलें चीटिंग बोले হচ্ছে व्हाट एग्जिस्ट করে না নাউন আর ভার্ব চিটি হয় তো অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট এটা হচ্ছে আমি জাস্ট এমনি বলে দিলাম এন্ড আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে আমাদের তো স্যার এভরিথিং ইজ প্রিডেস্টাইন কালকে কি হবে আমরা জানি না টাইম বাই দ্যাট সুপিরিয়র ইন্টেলিজেন্স তাই তো সো যদি কালকে কি হবে জানি না সো আমরা এখন যেটা করছি সেটার তো কোনো রিলেভেন্সই নেই আমি এই মিটিংটা অ্যাটেন্ড করছি এটা হতে পারে কালকে আমি জিম যেতে গিয়ে মারা Got it. You are asking that I forget এভরিথিং ইজ everything. ইররিলেভেন্ট না Correct. Very nice question. So your question is that मैं दूसरों के लिए बोल देता हूँ कि कल मैंने जो किया था वो मैं आज भूल गया, जो आज किया था वो कल भूल जाऊंगा. इसका मतलब कोई चीज करने का कोई मतलब नहीं है ना जब भूलने वाला हो तो, है कि नहीं? हाँ एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कुछ दिन बाद कुछ साल बाद 20 साल बाद मैं मर जाऊंगा मैं वो भी कॉन्स्टेंटली भूल रहा हूँ Yes. कि मैं मर जाऊंगा Correct. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन पूछा है आदित्य वो क्वालिफिकेशन है ह्यूमन बीइंग होने का. एक ह्यूमन बीइंग जानवरों से अलग कैसे होता है? एक जानवर में और एक मनुष्य में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है ना उसका अंतर है. अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ये क्या हो रहा है? आपने क्वेश्चन पूछना शुरू किया है. मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन आदित्य, अब आप ह्यूमन बीइंग बन चुके हैं. अगर दूसरे लोग बुरा नहीं मानेगा पर शास्त्रों में तो लिखा होगा. हाँ सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन. देखिए क्या है आदित्य, अगर आप खाना इररिलेवेंट है, ठीक है खाना इररिलेवेंट, तो आप खाना छोड़ दोगे. आप भूल गए परसों क्या बना था खाने में, इसका मतलब ये थोड़ी हम खाना छोड़ेंगे. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय रिक्वेस्ट टू यू इज कीप ऑन डूइंग योर वर्क व्हाटएवर इज नेसेसरी. हाँ, हम क्यों भूलते हैं, चलो इसको डिस्कस. मैं क्यों भूल गया मैंने कल क्या किया था, मैं क्यों भूल गया 20 साल बाद मैंने क्या किया था? वो इसलिए क्योंकि हम जितने भी काम कर रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए कर रहे हैं, हमारे माइंड के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ सर. है ना? ज्यादा काम किस लिए कर रहे हैं? बॉडी के लिए कर रहे हो. अभी क्या है आपका बॉडी रोज बदल रहा है ना? हाँ सर. रोज बदल रहा है. जब आप छोटे थे अभी बड़े हो गए. परसों ये गीता के 2nd चैप्टर में भगवान बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ वर्ष को, देहांतर समझ लो अक्षर तो आपको याद है क्या? वो कौन सा वर्ष है? देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम. बच्चे थे बड़े होते बूढ़े होते लाइक तो हमारा बॉडी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है. चूंकि हमारा बॉडी हमेशा चेंज हो रहा है
उस बॉडी से जुड़ा हुआ इंटेलिजेंस भी चेंज हो रहा है। उस बॉडी, ये मोबाइल है, इस मोबाइल का मेमोरी इसी के साथ है। इस मोबाइल को हटाकर अगर मैं दूसरा मोबाइल उठा लूंगा तो वाले मोबाइल का मेमोरी क्या, वो उसके साथ चला गया ना, अब इसका मेमोरी आ गया, राइट। इसको छोड़ के तीसरा मोबाइल उठा लूं तो क्या होगा, दूसरे वाले का ये मेमोरी चला गया, तीसरा वाला आ गया। सिमिलरली क्या हो रहा है, हमारा एक बॉडी है, उससे एसोसिएटेड एक मेमोरी है। रोज हमारा बॉडी चेंज हो रहा है, तो जैसी बॉडी चेंज होता है उससे एसोसिएटेड वाला एनर्जी भी, वाला मेमोरी चला जाता है। फिर और बॉडी बदलता है तो फिर से क्या होता है, उस बॉडी से एसोसिएटेड मेमोरी चला जाता है। ये कारण है कि हम भूलते हैं, बहुत सारी जनरल चीजों को हम भूलते हैं। फिर क्या होता है, फिर कुछ चीजें याद क्यों रह जाती है? करेक्ट, तो हमारा बॉडी जो है वो 8 लेयर्स में बना है। 8 लेयर्स आगे वाले किसी सेशन में डिस्कस हो, आई होप सो। 8 लेयर्स में बना है, तो हर लेयर के चेंज होने का अलग अलग टाइमिंग है ना। जैसे कोई मोबाइल को खराब होना है, ये मैं पढ़ा था, हाँ ये भगवद गीता में। अन्नमय कोश, कोशमय कोश, करेक्ट, परफेक्ट। हाँ, अन्नमय, मनोमय, आनंदमय, चिन्मय, ये हाँ। सारे। तो इसलिए कई आप लेयर में चीजों को भूलते हो। 8 लेयर्स में बॉडी, बॉडी में वो क्या है, सोल। क्या है वो, जैसे कि क्या होता है, एग्जाम्पल, जैसे साइंटिस्ट या कोई प्रोफेसर है, उसकी इंटेलिजेंस में रहता है सब कुछ, तो बूढ़ा बहुत बूढ़ा होने तक उसको याद रहता है, पर वो भी भूलने लगता है ना। खाना भूल जाएंगे, खाना क्योंकि बहुत बाहर की चीज है ना, जस्ट चमड़ी से रिलेटेड है खाना, तो खाना तो जल्दी बोलते हैं, परसों क्या कहता है नर्स, जैसे किसने बहुत साइंस पढ़ा है, बहुत पीएचडी कर रखा है, बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएचडी कर रखा है, उसको लंबे समय तक याद रहेगा, पर उसको भी रिवाइज करना पड़ता है। प्रोफेसर भी भूल जाते उसको रिवाइज। पर एक चीज जो है परमानेंट है, परमानेंट बैंक बैलेंस, वो है सोल, वो है आत्मा। हाँ, पर जो परमानेंट है वो क्या है, सोल, आत्मा। तो जो आत्मा से एसोसिएट हो जाता है वो परमानेंट रहता है। दैट विल नॉट गो, दैट विल बी योर इटर्नल बैंक बैलेंस, चिन्मय, जो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए बचपने में भी अगर कोई बच्चा भगवान की भक्ति करता है या कोई गीता का श्लोक वगैरह याद करता है, कोई प्रार्थना याद करता है विष्णु भगवान के लिए, राम भगवान के लिए, कृष्ण भगवान के लिए, कभी प्रसाद खाता है जगन्नाथपुरी का, तो प्रसाद का जो स्वाद है जगन्नाथपुरी का, जो भगवान की स्तुति में गाए गए श्लोक हैं, अंत समय तक उसको याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ से कनेक्टेड है, वो सोल से कनेक्टेड है। वो कहाँ से कनेक्टेड है, आत्मा से कनेक्टेड है। समझ रहे हो ना आदित्य? तो आपका एक क्वेश्चन कि मैं सब भूल जाता हूँ तो मैं जिंदा क्यों नहीं है, 20 साल बाद मरना ही है, मरने के टाइम क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको अब चीज पता लग गई कि बॉडी में कुछ चीजें जो मैं इनपुट डालता हूँ वो टेम्पररी चीज में जाती है, अंत काल में जब आप मर रहे होंगे तब स्मरण में जो चीज आएगी वैसा आपको नेक्स्ट बॉडी और रिजल्ट मिलेगा। वो कैसे होता है, भूतानि यान्ति भूतेज्य, देवानि यान्ति देवव्रता, पितराणि यान्ति पितृव्य, मद यज। भगवान मेरी भक्ति ज्यादा से ज्यादा, मेरा स्पिरिचुअल नरिशमेंट करो, आप ये गीता पढ़ो, मेरा नाम लो, ना वो स्पिरिचुअल नरिशमेंट जो होगा उससे मैं आपकी वो एंड वाली चीज है ना उसका टेक केयर हो जाएगा। ऐसा याद रखिए। So you please continue with these sessions. Actually, these sessions are nothing but the nourishment to your soul. हर कोई बातें कर रहा है शरीर को कैसे स्वस्थ रखे, कोरोना से कैसे बचे, इंटेलिजेंस कैसे बनाए, नौकरी कैसे करे, दुनिया में कैसे जीते और सफल हो। कोई बात नहीं कर रहा है कि जो अल्पी आत्मा है उसको खाना कैसे खिलाए, उसको शक्तिशाली कैसे बनाए, उसको सुदृढ़ कैसे बनाए, कैसे उसको तैयार करे उस अंत समय के लिए। और ये जो हम अभी चर्चाएं कर रहे हैं इन सभी अभिव्यक्तियों में, इन सेशंस में, वो उधर जाके कल्मिनेट होगा सिस्टमेटिकली। मतलब सर इस सेशन में मुझे मेरा सूक्ष्म देह और कारण देह को नरिशमेंट मिलेगा इस सेशन से, सही तो सर? शुष्क देह क्या बोला आपने? तीन देह होता है, स्थूल देह जो फिजिकल बॉडी, स्थूल देह को आप लोग दे रहे हो, कारण देह मतलब इंटेलिजेंस, उसको आप स्ट्रेंथ कर रहे हो, और जो आपका स्वदेह है मतलब जो आपकी आत्मा है, नित्य देह, नित्य देह बोलते हैं उसको, हाँ, उसको आप नरिशमेंट दे रहे हो। करेक्ट, परफेक्ट, समझ गए आप होशियार बच्चे। ओके, एनीवन एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। मैंने प्लान किया था 7:15 पे खत्म करूंगा, बट वेरी नाइस दैट यू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर एक्चुअली द सिम्पटम ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का प्रमाण है प्रश्न। और कोई प्रश्न किसी का?
सर अगर मैं ऐसा सोचूं कि ठीक है मैं सही से जीऊंगा, सबका मदद करूंगा, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना सर कि किसी का मदद करे तो दिल से कुछ अंदर से कुछ अच्छा फील होता है। तो अगर मैं इस तरह से जीऊं, मतलब एक अच्छा इंसान बन के हमेशा, अगर मैं पूजा पाठ ना करूं तो ये क्या मतलब बेस्ट लाइफ होता है या फिर ये गलत है? आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कभी कभी मदद करके कभी कभी अच्छा महसूस करते हैं ना? हाँ सर। ऐसा क्या करें आप आपके जीवन में कि आप हमेशा अच्छा अच्छा करें और हमेशा हमेशा खुश महसूस? अगर वो करने को मिल जाए तो क्या आप बहुत खुश होंगे? कि आपको ऐसी कोई चीज कर दी कि वो आपने अगर 2-3 घंटा रोज कर लिया तो फिर पूरा दिन भर आप दूसरों की मदद करोगे, पूरे दिन भर आप खुश खुश रहोगे, अच्छा महसूस करोगे। वो 2 घंटे वर्थ हैं कि नहीं? हाँ जरूर सर। So I don't know about पूजा पाठ, what context you are saying, but I surely know वो 2 घंटे आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। आप 2 घंटे इन्वेस्ट कर सकते हो भगवान विष्णु की भक्ति में, गीता के पारण में, उनका हरि नाम लेने में, और श्योरली वो आपको नरिश करेगा कि आप हमेशा हमेशा के लिए सभी के, अभी भी क्या हम मदद करते हैं तो हम उसमें डिस्टिंक्शन करते हैं कि कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा दुश्मन है, किसी को मैं पसंद करता हूँ, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, राइट? कितना अच्छा होगा अगर हम नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन भी बंद करके सबको समान दृष्टि से देखने लगे। बुद्धिया विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाकेच पंडितः समदर्शनम्, गीता के 5वें अध्याय। सर कभी कभी लोग भी तो बहुत गलत होते हैं ना। हाँ, वो गलत करें या सही करें, मुझे हमेशा अच्छा करने में खुशी है ना, है कि नहीं? हाँ। ये विचार ही कि वो गलत है मुझे दुख देता है कि नहीं? अगर मेरा वो दृष्टिकोण हो जाए, मेरा वो विजन हो जाए कि हर कोई ही बहुत अच्छा है, मुझे सिर्फ में सब अच्छा ही दिखे, मैनिफेस्ट जगन्नाथ बड़ा बड़ा आंखें क्या सबका अच्छा जो है वो देखते हैं, वो बुरा नहीं देखते, उसमें आंखें बंद करके रंगनाथ होके सो जाते हैं, ठीक है? जगन्नाथ बड़ा अच्छा देखते, बस अगर वैसा विजन हो जाए तो सर कभी कभी बहुत अच्छा बनने से दुख ज्यादा मिलता है। अभी देखो, अभी आप अपनी बात को रिफ्यूट कर रहे हो, अभी वो अच्छा बनने से सुखे बोलते बहुत अच्छा बनने से नहीं, मतलब जैसे कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कभी कभी बहुत अच्छा हूँ मैं, तो फिर लोग फायदा उठा के लेके चले जाते हैं। हाँ, और तो वो सब मैं बता रहा हूँ अच्छा बनने तो में कुल मिला के डिस्कशन यहीं पे लोगों को माफ करने में या फिर कि मुझे प्रैक्टिकली हमेशा अच्छा होना है, ठीक है? हाँ। अभी उसको क्या आप खुद से बन जाओगे? नहीं, और बन जाओगे तो टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, खुद से कितना एक्सपीरियंस लगेगा। वो रेडीमेड दे रखा है ना आपको फॉर्मूला, भगवद गीता ऐसे पढ़िए, उसको सही लोगों से सीखिए, जो हमने डिस्कस किया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके और आगे चलिए, और वही हम इस सेशन में कर रहे हैं। सिस्टमेटिकली आप देखेंगे बिल्डअप होगा आउट, और फिर अच्छा भी आप क्या करोगे? भिखारी को 5 रुपए दे दो जाके उसको सिगरेट मिलेगा, क्या आपने अच्छा किया कि बुरा किया? बुरा कर दिया आपने। नहीं सर, मैंने तो अपने अच्छे मतलब मैं तो अच्छा ही किया था। हाँ, आपने दिया, हम स्वार्थी हो गए। अभी मेरे को पीठ पे थपथप मिल गई, 5 रुपए दिया, कितना? उसके साथ क्या उसकी पत्नी आपको गाली देगी कि खुश होगी? गाली देगी। तो अच्छा हुआ कि नहीं? इन द एंड आप बताओ, तो ऐसा भी तो कुछ अच्छा होगा जो सभी के लिए हमेशा अच्छा हो। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, राइट? हाँ। वो सीक्रेट कैसे पता लगेगा? और जब ये तो आपने थोड़ा बहुत अच्छा किया और थोड़ा महसूस हो रहा, अभी ऐसा अच्छा करोगे कि हमेशा सभी के लिए अच्छा हो, तो कितना आपको खुद अच्छा महसूस होगा। इमेजिन करिए, तो हैप्पीनेस आपके काबू के बाहर होगी, will be beyond your control, and that science comes through spiritual science. That is actually the spiritual science, and that we are discussing now systematically. मुझे पता नहीं पूजा पाठ क्या बोलते हैं, और I don't comment. Okay sir. Okay, but yes, you need some extra endeavor for cultivating that activity. It's not just automatic or by chance. चलिए, काफी प्रश्न उत्तर हो गए, कल 12 बजे मिलते हैं ना? हाँ सर, थैंक यू सर। Yes, sure. Thank you very much, sir, Thank you very much. for the wonderful session and solving the doubts. Thank you, Aditya and Prabhakar, for your good questions. So we'll meet tomorrow again, okay? Tomorrow again at 12 o'clock. Sir will come tomorrow, and this repeat will happen evening 6 o'clock. I missed it, okay?